Hello students, I'm Sana Musani and today we're gonna be exploring a new subject and that is Organization of Commerce and Management. I hope you'll enjoy. Chapter 1: Nature, Purpose and Scope of Business. Contents of the video includes glimpse of the chapter, introduction, meaning of economic activity, meaning of non-economic activity, difference between economic activity and non-economic activity. Glimpse of the chapter. What will you learn in this chapter? Economic activity, non-economic activity, difference between economic activity and non-economic activity, and further. Introduction. Economic activities keeps trade and commerce alive in all over the world. In your city or village, a potter, a blacksmith, a weaver, a cobbler gets economic benefits or monetary returns through economic activities. Thousands of employees work in cities, in small or big factories to get employment. All these activities are economic activities conducted with the objective to earn income. Business is economic activity conducted with the objective of profit. Besides business, profession and employment are also types of economic activity. Human needs are increasing continuously. Man has to perform economic activity to satisfy his needs. Example: farmer produces food grains. Lawyer charges fees for representing a case in a court on behalf of his client. A worker gets wages by working in the factory. All these activities are called economic activity as the objective of this activity is to get monetary return. Some persons in society performs activity without aiming at economic benefit or monetary return. Example: social worker is working with the aim of social service. If doctor provides free medical service with the motivation of social service, it is called non-economic activity. There is no objective of economic benefit, monetary consideration or monetary return. Alright, now I'll explain you this. It's a fact of life. Even to satisfy a basic needs, a person needs to earn money. बेसिक नीड्स क्या होती है? जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. वो चीज़ों के लिए भी आपके पास पैसे होने ज़रूरी है, या पैसों का होना ज़रूरी है. Here I have marked or I have highlighted this. Just have a look. A potter, a blacksmith, a weaver, a cobbler gets economic benefits or monetary returns through economic activities. ये लोग भी क्या करते हैं? काम करते हैं और इन रिटर्न क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? मॉनेटरी बेनिफिट की. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है कि अ पर्सन वर्क एंड इन रिटर्न expects monetary benefit or monetary gain. If person expects monetary gain or monetary benefit in return, then that type of activities is known as economic activities. Thousands of employees work in cities in small or big factories to get employment. बहुत सारे एम्प्लॉयज़ सिटीज़ में जा जा के छोटी फैक्ट्री या बड़ी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं. वो क्यों काम करते हैं? टू अर्न मनी. और पैसे क्यों चाहिए? टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स, राइट. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. मैन हैज़ टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी टू सेटिस्फाई हिज नीड्स. Example, ये farmer is given, lawyer is given. I'd like to give one more example and that is of doctor. Yeah, doctor also take the fees for the treatment, right? So all these activities are called economic activities as the objective of these activities is to get monetary return. उनका main objective क्या होता है? To get monetary value in return. वो लोग काम करें और उसके बदले में क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उन्हें पैसे मिले. तो दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज़ नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. सम पर्सन इन सोसाइटी परफॉर्म्स एक्टिविटीज़ विदाउट एमिंग एट मॉनेटरी बेनिफिट और इकोनॉमिक बेनिफिट और मॉनेटरी रिटर्न. एग्जाम्पल, अ सोशल वर्कर इज़ वर्किंग विद द एम ऑफ सोशल सर्विस. अब वो डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं. अभी कोविड-19 चल रहा है, राइट. पेंडेमिक सिचुएशन है. वी आर फेसिंग अ पेंडेमिक सिचुएशन. सो अब इस सिचुएशन में कुछ डॉक्टर्स बिना फीस चार्ज किए लोगों को ठीक करें, लोगों
की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, राइट? तो दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू कैन से दैट इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज वहाँ पर कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, वो पैसे चार्ज नहीं कर रहे, फ्री की सेवा दे रहे, राइट? तो वो एक्टिविटी क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव नहीं है? इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है वहाँ पर। So that type of activity is known as non-economic activity. So next is meaning of economic activity. Economic activity means an activity carried out with the objective of economic benefit or monetary consideration. Man has to perform economic activity for his livelihood so that he can satisfy his needs by getting money. All economic activities are called productive activities. A person doing economic activity satisfies the needs of others and gets economic benefits for him. Example: a farmer by producing food grains, a weaver by manufacturing cloth, a carpenter by manufacturing furniture satisfy the needs of different classes of society, and by this way gets economic returns. Economic activity is at the center of the modern world. ये जितनी भी एक्टिविटीज़ के मैंने एग्जांपल दिए, ये सारी कैसी एक्टिविटीज़ है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है मनी की, जहाँ आप काम करते हो, ठीक है, उसके रिटर्न में आपको क्या चाहिए? मनी। तो दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ कैसी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है? टू सेटिस्फाई दी नीड्स। आपके घर में एन योर होम, your father might be earning money, right? So what he is doing, he is working and he is earning to satisfy your need. So basically economic activity is very important to satisfy the needs, and it is very important for livelihood. To satisfy or to survive also you need to perform economic activity. As economic activity is included with economic benefit, you'll get economic benefit or monetary consideration and economic activity. Non-economic activity, the objective of non-economic activity is neither monetary return nor economic gain. Some person in society perform activities without the objective of monetary consideration or economic gains. Example: social service carried out by social worker, nursing activity by mother for her children, working of volunteer propagating the unity of community, volunteer working in relief camps where the people are affected by natural calamities like earthquakes, tsunami, etc. are called non-economic activity. The motivating factor for these activities are service to country, service to society, and feeling of all this brings change in the life of a person. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या है? टू प्रोवाइड सर्विस टू अ पर्सन, या टू प्रोवाइड सर्विस टू अ कंट्री, या टू प्रोवाइड सर्विस टू ग्रुप ऑफ पीपल। वहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन काफ़ी एक्टर्स ने लेबरर्स की मदद की ताकि वो अपने घर जा सकें। काफ़ी एक्टर्स ने व्हीकल्स अरेंज किए, ट्रेन, बस, ताकि लेबरर्स अपने घर जा सकें, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज़ नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एज करंट सिचुएशन इज़ अ पैंडेमिक सिचुएशन, सो डॉक्टर्स का भी मैं एग्जांपल दूंगी दैट डॉक्टर्स ने काफ़ी लोगों की सेवा की। They have treated COVID-19 patients without charging even a single penny. So that kind of activity is known as non-economic activity. This kind of activity is done because people feel good in doing this kind of activity. They feel pleasure. Next is difference between economic activity and non-economic activity. Here point of difference is given. First is objective. Economic activity motive is to get economic benefit. Economic activity का motive क्या होता है? To get economic benefit.
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है? सोशल सर्विस और सर्विस टू कंट्री और सर्विस ह्यूमन सर्विस, राइट? एक्सपेक्टेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी की क्या एक्सपेक्टेशन है? इन रिटर्न दे एक्सपेक्ट प्रॉफिट, सैलरी, फीस एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब कोई पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है तो उसे इन रिटर्न प्रॉफिट, सैलरी, फीस और एंड ही बेसिकली वांट्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की जब कोई पर्सन करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? सर्विस टू कंट्री और सोशल सर्विस टू पीपल। टाइप, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिक टाइप्स कितने हैं? देर आर मेनली 3 टाइप्स: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नो टाइप, as money is not involved. Risk and uncertainty, there remains risk and uncertainty. As money is involved तो रिस्क तो रहना ही है. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में नो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बिकॉज मनी इन्वॉल्व नहीं है, मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है. So that's it. Thanks for watching the video. If you like it, do share it and subscribe my channel. Thank you.